So guys, we had a great Q&A session, and now we are finally going on to the actual topic, that is how to schedule and strategize your CET prep. Strategize your CET prep. So guys, why is this session very necessary, and why is this something that you should know even before you start your CET prep? And if you're already in the process of your CET prep, then you are maybe doing this wrong. Not for sure, but शायद तुम ये गलत कर रहे हो. So that is why, to show you what your mistakes are and to show you how will you start it from, and there is never a late time to start. So you can start even now with a good strategy. It will definitely help you. अगर तुम ऑलरेडी तुम्हें लग रहा है जब तुम 90 जितने मार्क्स ला रहे हो तो मेरा स्ट्रैटेजी ठीक है, work on your strategy, you will start scoring better. It will really help you. Okay, so yeah, before that I'll again just make this announcement that we have a new live batch starting. That's on 1st April, and no, this is not April Fools. Yeah, so we are starting it on 1st April. This is everything that is there. The best thing that I'll say still is only 30-40 students per lecture. Like that is probably the best thing that I have to offer. इसलिए मेरे lectures अच्छे से समझते हैं, and I don't plan on increasing that anymore. So yeah, details on this you can find on the website crackavitas.com. So yeah guys, schedule. Let's divide the entire thing. Now everybody can't have the same schedule. जैसे you can't wear your friend's underwear, you can't use your friend's schedule. You need to understand your strategy. Your schedule will depend on how much you are scoring right now. I will first start with the people who are scoring 110 plus. My God, आज क्या हो रहा है मेरे को? Yeah, 110 plus जिनको मार्क्स है ना, मैं उनसे पहले चालू करता हूँ. You guys will not have even a single topic wise schedule. And by topic wise, I mean purely only when it comes to QA and verbal. ये दो में तुम topic wise नहीं करोगे. And you will reserve time especially for LR every alternate day. And DI once in every 3 days. That's it. Once in every 3 days तुम DI practice करोगे, not more than that. This is assuming that तुम QA की practice रोज कर रहे हो. And by QA I mean the two parts of QA which are QA calculative. Wait, I'll just write calculative and QA technical. इनका डेफिनेशन इनका डिफरेंस तुम लोग को, अगर तुमने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो देखे तो पता है सबको, राइट? यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्यूए कैलकुलेटिव एंड टेक्निकल. यस सर. तो ये दोनों का प्रैक्टिस अलग होगा एंड दोनों का प्रैक्टिस रोज होगा, इन डिपेंडिंग ऑन हाउ योर टाइम शेड्यूल्स आर, डिपेंडिंग ऑन हाउ डू यू वांट टू बिल्ड एंड व्हाट डू यू नीड. बट योर प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉपिक वाइज. तुम ये नहीं डिसाइड करोगे दैट मैं आज मैं पहले से तुम टाइम टेबल नहीं बना, मैंने 2 अप्रैल को मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा. नहीं, यू गाइज आर गोइंग टू मेक योर एंटायर शेड्यूल वेरी फ्लूइड. इट विल बी बेस्ड ऑन योर मॉक्स. Based on your mocks, your schedule will be very ABC centric. That हर मॉक के बीच में 3 दिन का गैप रखो, and trust me, it is very much doable. 3 दिन का गैप रखो तो तुम अपने पास कितने डेज है? 90 डेज है ना? 90 डेज नहीं, टेक ओनली 80 डेज. आई एम सेइंग 80 डेज ही पकड़ो, क्योंकि तुम रोज तो मॉक देने नहीं वाले और कभी कभी मिस होगा, या सीटी के थोड़े दिन पहले मॉक देना बंद कर दो. 80 डेज you will take 1 mock in every 4 days. मतलब 1 mock and बाद में 3 दिन का break. 1 mock 3 दिन का break. So how many mocks are you taking? 20 mocks. So for people who are scoring well, I'll tell you 20 mocks is enough, and 20 mocks is enough for everybody. Huh? This is not only for people who are scoring well. 20 mocks तुम सिर्फ ABC strategy पे ही build करोगे, nothing else. ये mock में जो तुम्हारा A category, B category, C category था, वो तुम one day A category, second day B and C category, वापस third day A category, and then next mock and mock. That is how your timetable will be. How to do the ABC category, I will leave it up to you guys. Okay. Sir, just a moment. Camera अभी बंद कर सकते हैं? Oh, now you can turn off the cameras. जब मैं screen record करता हूँ तब you don't have to turn on the camera. It's okay. Yeah. I hope the 110 plus wala category was understandable. And then we go on to the category which is 85 to 110. 85 less,
and 85 to 110. गाइस तुम लोग में क्या फर्क, एनीवन वांट्स टू ट्राई एंड से दैट इन दोनों में फर्क क्या होगा टाइम टेबल का? एनीवन? स्कोर नहीं सर बी कैटेगरी सम, और जो सी कैटेगरी यूज यानी ट्राई करने को देखते हैं। in 85 category, like less than 85, you will, your biggest goal here is to recognize, nahi, to clear concepts. recognize B and C category. If you understand कि तुम्हारा B और C category क्या है, that will be your biggest goal. ये टाइम पे only using your A category, सिर्फ A category solve करके you will be able to beat a score of 90 at least 90, because A category होते हैं 120 questions in the exam. ABC का स्प्लिट ऐसे होता है, दिस इज द स्प्लिट ऑफ A, B and C. A कैटेगरी के 120 क्वेश्चंस होते हैं. You will score 90 at least if you are only able to weed out the A category questions and solve them. I understand 100% accuracy नहीं होगा. I am telling you 75% accuracy रखो ना. तुम 85 से लेस कैटेगरी से ये वाली कैटेगरी में पहुंचोगे, एंड फॉर दैट यू विल रिकॉग्नाइज व्हाट आर योर बी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चंस. स्क्रू देम फॉर नाउ. अब तक के लिए भूल जाओ. You don't even look at those questions. You start understanding which are the questions which can get you a higher MPM and can get you marks in a faster fashion. You have to at least reach a level जहां पे तुम्हें कुछ नहीं तो 90 परसेंटाइल तो मिल ही जाए. मिनिमम 90 परसेंटाइल मिलना चाहिए. And then comes this category 85 से 110. यहाँ पे you are at a point जहां पे तुम्हारा A category sorted है. You are going to start foraying into your B category, B and C category. For you guys, the most important thing is understanding which topics in the B and C category will be doable for you and will not be doable for you. So your timetable, देखो तुम लोग तो बाकी कुछ मत करो, सिर्फ A category ही पढ़ो, 85 से लेस वाले. जो 85 से 100 वाले हैं, you guys have to figure out, you guys have to timetable उस हिसाब से तुम बनाओ. Your timetable will be topic wise. तुम्हारा होगा दैट मॉक 4 दिन का गैप या फिर 5 दिन का गैप, आई लीव इट अप टू यू, एंड देन 1 मॉक. बट इसमें से A कैटेगरी, B एंड C कैटेगरी एंड वापस A कैटेगरी. एंड टॉपिक वाइज this will be a recurring timetable in every 2 weeks. तुम्हारा अगर तुम ऐसे 10 दिन में बांट रहे हो, ऐसा 1 2 3 4 5 एंड देन M डिवाइडेड अकॉर्डिंगली, दैट हर 2 हफ्ते जो तुमने ये पढ़ा है ना, ये वापस तुम दूसरी साइकिल के बाद रिपीट करोगे. दैट इज हाउ द टाइम टेबल यू विल बिल्ड. दैट इज द काइंड ऑफ टाइम टेबल दैट यू विल बिल्ड. इस हिसाब से तुम्हें बिल्ड करना है. ऑल योर टॉपिक्स शुड बी कवर्ड इन दिस. वो 10 दिन में तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए. नाउ आई लेट यू डिसाइड हाउ इट इज गोइंग टू गो till you beat the score of 110. Then you will move on to ABC categorization. मतलब mock wise ABC categorization, that is what happens for 110 plus. But 85 से 110, this is going to be a schedule. Are you guys understanding what I'm trying to say? Yes sir. Yes sir. Yes. See, sir. this is the understanding of how the timetable will be built. Like I have a timetable built. मेरे पास ऑलरेडी एक timetable है जो मैं तुम लोग को देता हूँ, like students को देता हूँ मेरे. But if you have to build it yourself, I'm also teaching you how to make your own timetable. So this is it. Hey, also did I release the coupon code? नहीं बोला ना मैंने? No, sir. No sir. नहीं. Wait, let me type it out. Or wait, I'll just write it down here. Yeah, you guys can use this. Just use 2703 coupon code on the website. You will directly get a कितना? Would I have set it up for? Yeah, 750 off. This is only for the full package. Full package and only till 7th. Also, the people on YouTube, you won't be able to use it. I'm very sorry. This is only for the attendance of this webinar. So webinar attendees, you have this. Just use the coupon code 2703. You'll get a 750 off. Okay? हाँ ना, okay, yes, हाँ. Yes. Okay. Sir. This is not for prep. नहीं, prep और score. अरे, you guys think that I get the entire fees? No, I don't. I have tie-ups. Money goes to them.
To tell you honestly, my this year's revenue has been less than my last year's revenue. Last year it was all for me. This year it is divided. Understood, So sir. I can't give you पार्टनरशिप कर transparent. लिया आपने? हाँ, so I have tie-ups ना. So I provide books, I provide mocks. तो वो सब में tie-ups में काफी कुछ. I have a software for viewing. तो हर एक student gets a unique serial code. वो serial key से ही तुम देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते. So the software company takes up a huge amount because every serial key is, well, last year था दूसरा software, but that was fuck all. So this time there is a better software, so they are charging higher. So I don't get the entire amount here. I know about last year. Yes, sir. Yes. Got it, sir. Got it. No problem. So yeah. So now the strategy. So by strategy, I mean what kind of a timeline will you set for yourself? So I'll instead just name it as timeline. And by timeline, I mean कौन से time तक तुम्हारा कितना score आना चाहिए. And again for this, I'm going to divide only in two categories. That is 110 plus and 110 less. Okay? तो उस हिसाब से divide करेंगे. पहले किसका लो तुम लोग बोलो? 110 less या 110 plus? Sir, strategy for less than 85? Less than 85, sir. Less than 85. वो less than 110 सबका सेम रहता है. सर No, that 110 से आप आगे बढ़िए. में रह गया सर 85 के लिए इसका. 85 less. नहीं, 8. 110 Less than 110 वाला. There are only two. गोल There are only हायर रखो, two. आराम से हो Yeah. जाएगा. The goals will be only two. Yes, Either correct. 110 minus, तो तुम्हारा ये I एक want स्ट्रैटेजी होगा, लाइक एक टाइमलाइन होगा, और 110 प्लस के लिए एक Less timeline than होगा. 110. Less than Okay. 110. Okay. So 110 for you guys, I'll tell you. See, honestly, I'll tell you, take a break till first. Start from first. वो जितनी तुम्हें मस्ती, जितना मजा करना है, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करना है, कुछ भी टाइम पास करना है ना, do it till first. You have 3 more days, मजे कर लो. After that, you have to set a time, and till first ना make a timetable. मतलब जो भी चीजें में तुम टाइम नहीं डाल सकते ना, फर्स्ट के बाद सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होगा, सिर्फ मॉक्स पे ध्यान होगा, मतलब पढ़ाई एंड मॉक्स पे ध्यान होगा, बाकी कुछ नहीं. तो उसके पहले जो भी नॉन प्रोडक्टिव, मतलब द थिंग्स विच डोंट गिव यू रिजल्ट्स, वो सब उसके पहले खत्म कर लो, एंड पढ़ाई मत करो बिफोर दैट. आई एम गिविंग अ टाइम टेबल फ्रॉम द फर्स्ट से लेके May 10th. For the people who are scoring 110 से minus 110 से less, this is for these people only. You will only study, nothing else. एक भी mock मत दो. You don't need to take mocks for now. But what you will take will be sectional tests और area wise tests. Sectional मतलब पूरा section आ गया, मतलब पूरा quants का 50 क्वेश्चन, एंड एरिया वाइज इज सिर्फ अरिथमेटिक, सिर्फ ज्योमेट्री, सिर्फ डीआई, ऐसा कुछ दो. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेक. व्हाई द लॉजिक बिहाइंड दिस, एरिया लिखा है मैंने, सॉरी. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट यू आर ट्राइंग टू फोर्टिफाई योर होल्ड ओवर द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि May 10th तक यू हैव टू बी श्योर दैट योर नॉलेज गैप इज क्लियर्ड. नॉलेज गैप तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए. Okay, post this we will start working on efficiency gap, because by this point if your knowledge gap is cleared, and I'm telling you, okay guys, tell me 99 percentile कितने पे आता है? Anyone tell me how much score पे you get 99 percentile? 140. पागल है क्या? वो 99.99%. सर 110 से 120 के बीच में आता है. 105 पे आता है. 120 से 130 के बीच. 105 पे आता है, because 99.18 is the SC कैटेगरी का कट ऑफ which comes up to 112. 105 पे 99 परसेंटाइल आता है. आई एम टेलिंग यू राइट अवे, जो लोग रिपीटर्स हो, 3 रिपीटर्स अपने हाथ रेस करो एंड टेल मी योर स्कोर्स. लास्ट टाइम कितना परसेंटाइल आया था? 85. जल्दी 85 percentile. सर मेरा 97. Oh, who's that? अविनाश सर. Avinash. And who was the third one? 95. 95. That is Vikas. Okay. All of you, your knowledge gap is incomplete. तुम्हें जितना लगता है ना कि मुझे आता है, तुम लोग को अभी तक पूरा नहीं आता. There are a few topics that you have left, and I can say this confidently. And देखो मैं सब कुछ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, because I have been in that place. I have been at a place जहाँ पे मुझे 99.67, 99.4, 99.3 परसेंटाइल था, and still ये परसेंटाइल मुझे कैसे आया पता है? पूरे क्वांट्स के बिना, विदाउट क्वांट्स. बात कर रहे हो? So
दैट इज व्हाई आई एम श्योरली टेलिंग यू, अगर तुम्हें 99 से कुछ भी कम आ रहा है ना, मतलब तुम्हारा नॉलेज गैप है. Without So quant, you guys have, sorry, without quant 99.9, 94. हाँ, 99.67, 99.4, 99.3. The scores were 116, 121 and 133. But still my percentile was going down. And this was without cons. So I am telling you for sure, तुमने कोई भी सेक्शन छोड़ा ना, नहीं होने वाला है. मेरा होल्ड बाकी तीनों सेक्शंस पे बहुत अच्छा था. एंड मैंने लास्ट पूरा ईयर सिर्फ वही किया. लास्ट टाइम जो मेरा प्रिपरेशन था, पूरा ईयर मतलब मैंने 3 महीना जितना ही मुझे मिला था प्रिपेयर करने के लिए, वो पूरा टाइम मैंने सिर्फ कॉन्स पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है. So I am telling you, I owe my 99 percentile only to my quants. So if you like my quants का tricks, वो मैंने लाइफ टाइम नहीं पढ़ा है. I used to suck at quants, like maths. मैं स्कूल में 4th में मैथ्स में फेल हुआ था, मुझे 5th में ग्रेस मार्क्स से भेजा था. So I'm telling you, you can't leave any section. If you like my quants का tricks, this has come out of those 3 months of desperation. So yeah, anything less than 99 percentile जिसको भी आए ना, पहले अपना नॉलेज गैप क्लियर करो. यू आर इन द सेम कैटेगरी. तो May 10th तक तुम दूसरा कुछ नहीं करोगे, तुम लोग सिर्फ स्टडी करोगे और सेक्शनल टेस्ट और एरिया वाइज टेस्ट दोगे. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाय सर, आकाश बोल रहा हूँ. या आकाश बोल. तो ये जो आप बोल रहे हैं अभी सेक्शनल एंड एरिया वाइज टेस्ट, क्या ये पैकेज में इंक्लूडेड है या फिर अलग से लेना होगा? This is in package 3. So that has 40 mocks and 40 sectional tests. वो है. Or what you can do is, see, okay, there is this choice also. So I have this because I have a tie-up with Test Fund also. So they give me this leeway that my students can get only area-wise and sectional tests if you want. So if you guys already have mocks, तुम्हारे पास mocks है और तुम्हें mocks में नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ package 1 चाहिए. For the people who don't know, package 1 is okay. छोड़ो, fees छोड़ो. Package 1 has only everything else except mocks, no mocks. Package 2 has 20 mocks, and package 3 has 40 mocks and 40 sectionals. 40 plus 40. Huh? But I have this leeway, like we get this leeway that no matter what package you are at, अगर तुमने package 2 भी लिया है ना, for 500 you can get only sectionals, like 40 sectionals plus 100 area, plus 100 area test. ये मिलता है. So this is something that you can get, but that was kind of a special thing that they have made for us. Relationship उनके साथ अच्छा है इसलिए. So that is something that I can help you out with. समझा बाबर? How do I pronounce your surname यार? Babbar or Babar? Yeah, it's Babar. Babar, okay. Do you understand? Yes, yes. तो ये सब है, ये सब तो when you inquire तब you can ask Riya all of this. She'll help you out. Okay? I hope 110 माइनस का स्ट्रैटेजी सबको समझ गया. Now for the people who are scoring 110 plus, कोई है वहां पे 110 प्लस वाला अभी है लाइव? कोई? एक जन ने हाथ उठाया. Me. Hey Keshav, you are the one who asked me that controversial question na last time. So yeah. So guys, now for the 110 plus wala category. For you guys, what I'm going to tell you, you guys are going to start taking mocks from the 1st April itself. So when you guys come to the sections, like you guys, if you join the course, you'll be watching the live lectures with everyone. But तुम लोग 1st April को पहला mock दोगे. Your practice will be, if you want, using the timetable that I give you, or you will practice using the timetable that I made for my previous batch, which has only ABC category. मतलब कॉन्ट्स का A कैटेगरी, कॉन्ट्स का BC कैटेगरी, कॉन्ट्स का C कैटेगरी, A कैटेगरी, बाद में वापस लॉजिक का A कैटेगरी, लॉजिक का BC कैटेगरी, लॉजिक का A कैटेगरी. वो पूरा मैंने स्प्रेड आउट किया, उसमें कब चीज कहाँ कहाँ रखा है वो मैंने उसमें बताया है. So your timetable is going to be 1 mock, 3 days का gap and 1 mock. This is all that you are going to do, but your game will be 1 year. तुम्हारा mocks में game नहीं होगा. See, you are taking mock. Okay, I want some of you to repeat. Why are you taking mocks? अपनी मिस्टेक्स देखने के लिए हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हैं,
Exactly. You are not taking mocks to score a 140 marks. No, you are taking mocks to realize which are the questions where you are losing out marks. कौन से टॉपिक्स में काम की जरूरत है उसके लिए तुम मॉक्स दे रहे हो. That will be your attitude for all the 110 plus people. So your timetable is going to be very fluid. It's not going to be as rigid as the 110 minus वाले people. 110 minus people have a very rigid timetable. जो तुम कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, रशिया यूक्रेन पे बॉम्ब फोड़ दे, you guys are not going to change the timetable at all. Okay? तुम्हारा सेम रहेगा. But 110 plus, your timetable will change every 15 days. And it will depend on every 15 days what is your progress. Because every 15 days you guys will have taken 4 mocks. और 3 से 4 mocks तो तुम्हारा होगा ही. So based on the mocks that you are taking, you will be switching up your timetable again and again and again. Do you understand? The 110 plus वाला student, I forgot. नाम क्या था? There was Keshav and there was the other one also. छोड़ो, regardless. Keshav, are you there in the meet या फिर छोड़ दिया? Sir, I'm there in the meet. हाँ. So yeah, this is going to be your strategy. You don't. There is no wait for me to tell you a strategy. ऐसा straight away नहीं बता सकता. It is just like when a student asks me that sir मैं 70 marks पे stuck हूँ, how do I increase my score? That is a wrong question to ask. Just asking a question. कौन से कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहिए अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके साथ? No choice. It's a personal decision here. It depends on. It depends on a lot of things. As a student, what you are, you must judge how you are as a student. If you are a student जो जिसको टीचर धक्का मारेगा या फिर जिसको घड़ी घड़ी कोई सिर पे आके टोकेगा तब तेरी पढ़ाई होगी, which is something that I was. Then you will benefit from the full course. But if you are someone who is very self-dedicated, यार अनिकेत क्या फालतूगिरी कर रहा है यार. Yeah, if you're someone who is very self-dedicated and you can understand that मेरा ये timetable है, I can stick to it. Even if whatever happens, I will stick to it. And अगर कुछ problem आया, I can find the solution to my own problems, which I became towards the end of my preparation. But पहले में ऐसा नहीं था. Then you will require. Then you can go in for the prep booster and score maximizer ones. Do you understand, Sanket? So it depends on your student attitude. And be honest to yourself here. And also, guys, I'm telling you that. Okay, how many of you are self preparing? Sir, please raise your hands. Yes, sir. Yeah, raise करो ना. Raise hand वाला button दबाओ. So there are quite a few. All of you, and how many of you are thinking that okay, many people have done it by themselves, so maybe self prepare करता हूँ. Is that your reasoning behind it? How many of you have that reasoning? Or because you don't want to spend money? Like I'm like, अरे इसमें क्यों पैसा डालूं? Already MBA के लिए पैसा जाएगा. What if इससे पैसा डाला और admission में नहीं मिला तो? I know many of you might have that attitude, but understand, joining a good mentor, and I'm not saying me, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे join करो. Join anyone that you find good. But okay, what is the costliest classes right now? Don't tell me the name, tell me the fees, please. Which is the costliest CET class right now? Course? 25,000. How? Sorry? 22,000. 22,000, okay? Yeah, what fees उन्होंने बढ़ा दिया, last year से fees बढ़ा दिया. I know ये कौन होगा, but I know उनका fees बढ़ गया. 22,000. Now you guys tell me, JBIMS अगर तुम गए तुम fees भरोगे या नहीं? If you get a JBIMS admission, will you pay for it or not? Yeah, will you crib about the fact that अरे इसमें 6 लाख का fees है मैं कैसे भरूं? You will get a loan. Sorry? Double भी fees. हाँ, you will pay for it, right? So if your chances of getting into JBIMS, if you are ready to pay 100% fee, how much is this? तुम लोग maths पढ़ते हो ना? How much is this of 6 lakhs? Approx 3.5%, right? If instead of paying 100% fees, if you can pay 103.5% fees, and your chances of getting into JBIMS are better, I'm not saying 100%. So why not take it, yaar? This is the reason why people invest in stocks, right? There is a risk, but I will also improve my money. Like my money will also increase. It's the same logic. You are investing money. You are not wasting money. You are not spending money. Money is never spent on education. Money is always invested on education. Okay.
Yes, sir. So guys, all of you understand this concept, and even if you have wasted your money, I get it. Many of people feel that already I have joined somewhere and I have wasted money. मुझे वहां से वो result नहीं मिला. I have joined classes and still I'm scoring less marks. So what? What if you lose money? Okay, guys. Okay, I should not say it out, but yeah, ठीक है. I have made a few lakhs of losses in the last 2 years in the stock market, taken a few wrong option calls. Does that mean that I will stop investing? No, I will put in money and recover that money. Is that the normal logic behind stock market? Everyone who invests in stock market, बराबर है या नहीं? Yes, sir. Yes. So if you have lost money, that does not mean that you crib about that money. It is money. It will come back. You are spending the money so that you will be able to recover the money better by getting a good admission. So don't think about money that much. I understand that money is important and you are spending your parents' money if you are a fresher, but you are investing it. And if you get good results out of it, your parents won't regret spending money. The only way that you can make sure that the money is not wasted is work hard. No, work smart. Get to the college that will give you a return. That is when you are justifying. Are you understanding? I hope I'm making sense. Like, obviously, some of you might want to disagree with me. And I'm not even saying join me. If you want to join anyone. I'm fine with it. Obviously, I'll be happy for you. I will still help you out even if you text me on WhatsApp. I don't know how many of you have texted me on WhatsApp. I always reply. Even if you're not my student, I reply. There is only shortcut for JVM is practice. No, actually. The shortcut to JBIM is a smart practice. The shortcut to other colleges, the shortcut to the next 3 colleges in line, that is Wellinger, Pomba and MET is practice. Sir, एक question था पूछना था. Oh yes, please. Who's asking by the way? Harshada. Okay, yes, Harshada asked me. By the way, guys, 1 minute. Harshada, I'm sorry for cutting you off. Guys, any time frame related questions? If not, then we'll again go back to the अपना जैसा पहले discussion वाला चल रहा था. So I'll end the recording and we'll go back to the Q&A. Sir, I have a time frame question. Avinash. Yes. हाँ अविनाश पूछ. हाँ सर, पिछले साल मैंने एग्जाम दी थी और इस साल फिर से रिपीट कर रहा हूँ विदाउट क्लासेस, ड्यू टू सम रीजन विदाउट क्लासेस. इस बार का जो हम लोगों का टाइमलाइन रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? Depending on your score, regardless. See, तूने even if you are a repeater, if your score is 80, 110 से less, you fall in the same category as a fresher who is scoring 110 से कम. Okay. You only have the advantage that तुझे CET का atmosphere पता है, बाकी कुछ नहीं. Okay. You are not one-upping the freshers on knowledge. You are one-upping them only on the fact that तुझे पता है that CET में कितना stress होता है. So that is something that वो लोग पहली बार करेंगे, experience तू दूसरी बार करेगा. बाकी कुछ फायदा नहीं है तेरे को. नहीं सर, क्योंकि पिछले बार मैंने 97 स्कोर किया था, लेकिन यानी परसेंटेज स्कोर किया था, और इस साल किसी वजह से मैं क्लास नहीं लगा पाया, तो वो स्टॉक मार्केट के कारण ही, तो इसीलिए मैंने क्लास नहीं लगाया. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी जो खुद सेल्फ स्टडी चल रही है उसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए जनरली, क्योंकि मैं किसी मॉक में ज्यादा स्कोर करता हूँ, किसी में कम स्कोर करता हूँ. I'll tell you. So मैं वही बोल रहा हूँ, stop taking mock score now. You are at this point, you are wasting mocks. No offense, but you are. देखो mocks limited है. Okay, I'll rephrase that. अच्छी क्वालिटी के mocks limited है. Don't waste them. Make sure that you are taking them when you are prepared enough for them. Also, one thing I forgot to tell you, people who are scoring 85 से 110 ना, मतलब 110 माइनस वाली कैटेगरी, तुम लोग समझो 110 वाले लोग है ना, स्टार्ट से मॉक्स दे रहे हैं, तो तुम लोग बाद में 3 दिन में एक मॉक मत देना. यू विल हैव टू टेक अ मॉक, बाद में 2 दिन का गैप एंड देन टेक अ मॉक. आफ्टर 10th May. हाँ, आफ्टर 10th May. Pavan, are you doing this on purpose or what? Yeah. So after 10th May, you guys are going to do this. 2 दिन एक मॉक. Because only then बाद में तुम्हारे पास कितना बचेगा? 10th May के बाद तुम्हारे पास 50 दिन जितना बचेगा.
तो 50 दिन में से तुम लोग क्या करोगे? 45 डेज जितना बचेगा, 3 दिन में एक मॉक होगा, यू विल बी एबल टू टेक एटलीस्ट 15 मॉक्स. एंड वंस यू स्कोर 125 प्लस, बाद में यू कैन टेक एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक. मॉक एनालिसिस, मतलब मॉक प्लस एनालिसिस एंड वर्क. मॉक प्लस एनालिसिस एंड वर्क. आपण मुद्दाम तुला बघून आलो, आपल्याला रिटर्न घ्यायला लागतं का? हे गेलं का आपलं? या, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो तुम्हारा टाइम टेबल इनके जैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा टाइम टेबल अलग रहेगा. 110 माइनस पीपल. सो या, डज दैट सॉल्व योर डाउट अविनाश? Mr. Dell? Yes sir, yes sir. Yeah. Okay. So guys, I hope this clears up your doubts. And sir, I hope this एक और डाउट था. बोलो. हाँ सर, यानी अभी मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ. एक हिसाब से मैंने जॉब क्विट किया, पढ़ाई की, लेकिन अच्छे परसेंटाइल नहीं मिले, फिर से पढ़ाई करना शुरू किया. तो सर हाँ. इसके बीच में जब मैं यानी मोटिवेशन खो देता था, तो मैं यूट्यूब वीडियो देखता था. यानी जो सीईटी टॉपर थे, दे सेड कि हमने 90 मार्क्स दिए, हमने 60 मार्क्स दिए, हमने इतने मार्क्स दिए. तो सर उसका रियली इफेक्ट पड़ता है या आपको सच में 60 देना पड़ता है? क्योंकि सच जो में मैं क्या? और यानी सब सच में 60 मार्क्स या 90 मार्क्स देने पड़ते, क्योंकि पिछले साल मैंने 10 मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए होंगे और 97 परसेंटाइल लिए थे. And then there is also Warren, who took about 19 marks. So yeah, मैंने 22 marks दिए थे. There is one person in my batch that who I cannot name right now because, well, reasons I cannot name. काफी लोग समझ जाएंगे क्यों नहीं ले सकता नाम. उसने 14 marks दिए थे. He scored a 99.99 percentile. 17 marks दिए थे आकांक्षा श्रीवास्तव ने, who is the rank 3. So girls में टॉपर थी. ऋतुजा सोमानी took around 23 marks. I'm not exactly sure, but उसका 18 से 23 marks के बीच में ही था. So I'll count 23 as the highest. And there is Warren D'Souza who again scored a 99.99 percentile, the same score as me, 147. उसने 19 marks दिए थे. There are people who have taken 60 plus marks also. Most of you might know the names. There are people who have taken, and last year का टॉपर was शशांक प्रभु. Like हमारे ईयर का टॉपर, हमारे ईयर के टॉपर थे मिस्टर शशांक प्रभु. Great person. He took 2 marks. He is a teacher. बट देखो, अगर मैं भी अभी मॉक लेने जाऊं ना, प्रैक्टिस छूट गई है मेरी, तो मुझे भी मेरी पहली मॉक में 125 से 130 मार्क्स ही आएगा अगर मैं अभी भी मॉक लेने जाऊं तो. सो इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ मॉक्स, इट इज अबाउट हाउ वेल यू एनालाइज देम. तुम 50 मार्क्स दे दो. I have seen bad results with 50 plus marks also. I have seen great results. You are seeing all of them here with less number of marks also. Okay? Yes, sir. So, yeah. I guess that answers the question. Thank you. Sir, I have a question. Okay. Related to strategy and mock taking or timeline, or is it other question? तो मैं recording बंद करता हूँ because Q&A is to be non-recorded. Okay? That is like only for you guys, live वाले लोग. So tell me, recording बंद करूँ चालू रखूँ? बंद करो. बंद कर दो. Okay, चलो बंद करता हूँ. So for all the YouTube people, yeah, I just put myself on 2 minutes spotlight. So yeah, for all the YouTube people, thank you so much for seeing this. I hope you guys like the lecture, and if there are any doubts, just drop them in the comments. I'll try to answer as many as I can, and I hope you liked it. Bye guys.